today we will discuss about this bakery ingredients, or the most important among these, and which has a major role to play, is wheat flour. तो आपने पहले भी in your serial technology course you might have heard about this wheat. It belongs to family Gramney and genus Triticum, और ये species जो इसकी है we call that as estivum. सो इसका अगर आप साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम अगर आप वीट का लिखेंगे, सो वी विल ऑलवेज राइट इट इज ट्रिटिकम एस्टिवम. ठीक है. सो जो हमारा जो वीट है या वीट फ्लोर है, इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स. जो मेजर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ फूड पायरामिड, जो भी फूड पायरामिड है, तो जो मेजर बेस है उसका वीट हैज़ a part to play in that. It is rich in carbohydrates. You know that it contains 65 to 70% of the carbohydrates. Then it is rich in proteins also, which varies between 10 to 15% depending upon the variety. Or then you have other minerals. It has good ash content. It is rich in soluble fibers, insoluble fibers. Then number second about the wheat as an ingredient is it has unique property among all cereals. और वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इट इज़ एबिलिटी टू फॉर्म डो मेकिंग जो है वो खाली व्हीट फ्लावर में वो प्रॉपर्टी है. एंड यू नो व्हाई इट इज़ बिकॉज ऑफ a peculiar protein and we call it as gluten. जब हम व्हीट को when we mix it with water it forms dough, और ये खाली हमें इस फ्लावर में हमें मिलता है. और जो ये प्रॉपर्टी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड एज ग्लूटिन. जैसे हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि हर एक सीरियल ग्रेन में एक यूनिक प्रोटीन होता है. जैसे वीट में आपका ग्लूटिन है, देन इन राइस यू हैव राइजिन. सिमिलरली इन ओट्स you have we call this even barley में आपका hordane है. Ingredients, this constitutes the bulk of the food products. ठीक है. देन सिमिलरली जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है प्रोडक्ट्स, इट इज़ बिकॉज इट इज़ वंस अगेन बिकॉज ऑफ व्हीट फ्लोर. और जो वो स्ट्रक्चर है इन टर्न दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ग्लूटिन. देन एक और प्रॉपर्टी है व्हीट फ्लोर की, इट इज़ अगेन रिटेंशन ऑफ गैस. इट रिटेन्स गैस. और चाहे वो गैस हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, बाय यूजिंग केमिकल लिविंग एजेंट्स और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक फर्मेंटेशन एटसेट्रा. लेकिन जो व्हीट फ्लावर है, जब हम इसमें पानी मिलाते हैं तो इसकी टेंडेंसी हो जाती है कि ये गैस को रिटेन करता है, विच गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ बेकरी गुड्स. ठीक है. देन यू हैव टफनेस टेक्सचर. ये टेक्सचर देता है हमारे प्रोडक्ट्स को. जो व्हीट फ्लावर है हमारा, ये हमारे प्रोडक्ट को टेक्सचर, टफनेस, शेप वगैरह ये देता है. देन वी कैन क्लासिफाई दिस व्हीट इन डिफरेंट. दो टाइप के आपको व्हीट मिलेंगे. वन इज नोन एज स्प्रिंग व्हीट, देन सेकंड इज आपका विंटर व्हीट. सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी कैन से वी हैव रेड कर्नल व्हीट और वाइट कर्नल व्हीट. And we have one more classification which is very important as far as the food technology is concerned, is hardness. On the basis of hardness, sometimes we call it as soft wheat and sometimes we call it as hard wheat. Again, this soft and hard wheat, uh, this is on the basis of the protein content, कि उसमें प्रोटीन कंटेंट कम है या ज़्यादा है, तो उस बेस पे हम इसको सॉफ्ट व्हीट और हार्ड व्हीट कहते हैं. और एक और है जो यहाँ पे एक हमारी एक क्लासिफिकेशन है, इंडियन क्लासिफिकेशन. Basically, we have three types of wheats. One is Triticum aestivum, then we have Triticum durum and Triticum dicoccum. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन जो इंडिया में यूज होती है, वी क्लासिफाई व्हीट. प्रोटीन कंटेंट आपका कम होगा, विच रेंज बिटवीन 8 to 10%. और जो ये सॉफ्ट व्हीट फ्लावर है, ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं शाबाश केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, देन क्रैकर्स.
ये वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट्स में हम यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट में जो फाइनल टेक्सचर इज़ द डिज़ायर्ड क्वालिटी। तो इन प्रोडक्ट्स में अगर अगर आप देखेंगे केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट, क्रैकर्स, यू नीड फाइनल टेक्सचर। So that is why we are using soft flour. Similarly, uh, we have hard wheat flour, जिसमें प्रोटीन कंटेंट आपका वेरी करता है बिटवीन 11 to 12%। और जो ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं ब्रेड मेकिंग में, क्योंकि जो आपका ब्रेड मेकिंग में जो आपका रिक्वायरमेंट है टेक्सचर, दैट इज़ कोर्स टेक्सचर, यू नीड कोर्स टेक्सचर इन केस ऑफ ब्रेड। सो आपको हार्ड व्हीट फ्लोर चाहिए उसमें, जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा। तो ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं ब्रेड्स में। वी हैव वन मोर टाइप ऑफ व्हीट फ्लोर विच कम्स फ्रॉम ड्यूरम व्हीट, जिसमें 12% से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। और जब आप जो जो आपका अगर आपने पास्ता बनाना हो, अपने नूडल्स बनाने हो, so you need very high content of protein, more than 12%, so you have to use this durum wheat। ये जो पास्ता नूडल्स है उसके लिए जो हम फ्लावर को यूज़ करते हैं, we call it as semolina। it is one of the products of milling products of this durum wheat। granular form में है ये, and it is desired for pasta like products। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ वीट तो आपने यू माइट हैव रेड अबाउट दिस इन योर सीनियर टेक्नोलॉजी कोर्स। हम थोड़ा सा उसको आपको रिवाइज कराएंगे। तो वी विल नॉट गो इन द डिटेल। सो वी कैन बेसिकली डिवाइड द स्ट्रक्चर इनटू थ्री कंपोनेंट्स। वन इज एंडोस्पर्म, देन वी हैव ब्रांच, वी हैव जर्म। और जो एंडोस्पर्म है, इट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द स्ट्रक्चर। इट कॉन्स्टिट्यूट्स 83%, 83% ऑफ द कर्नल। इसमें 83% आपका कर्नल रहेगा। ठीक है। And it is rich in carbohydrates. It has it has proteins also. It has iron content. It contains some B vitamins also, like niacin, thiamine, riboflavin आपका। Then it has some fibers which are soluble in nature, soluble fibers. Then the second important constituent is bran, which constitutes 10 to 14% of the kernel weight, नॉट ऑन द होल ग्रेन ऑफ द कर्नल वेट। और जो ब्रांड है आपका, आपको जैसे पता है अभी ट्रेंड भी चल रहा है हाई फाइबर वगैरह है। इट इज़ रिच इन बी वाइटामिन लाइक थायमिन, नियासिन, riboflavin. It is rich in minerals also. It has insoluble fibers. That is why people are nowadays there is a demand for high whole wheat products because of this brand. Then there is germ. The germ, it ranges between 2 to 2.5% of the kernel weight, and it is a rich source of lipids. And you need to remove this germ during milling, otherwise अगर ये germ आपका मिलिंग में आ गया, तो जो हमारा फ्लावर होगा उसमें रेंसिटी के बहुत चांसेस है, उसकी शेल्फ लाइफ कम हो सकती है। याद होगा व्हीट फ्लावर का। सो वी हैव डिफरेंट मिलिंग प्रोडक्ट्स। वो डिपेंड करता है कि आपने किस रिडक्शन रोल से लिया, R1 से लिया, R2 से लिया, R3 से लिया। तो जैसे आपका वाइट फ्लावर है, दिस इज फाइनली ग्राउंड एंडोस्पर्म, इसमें कंप्लीट एंडोस्पर्म ग्राउंड होता है ऑफ द wheat kernel. And then we have one more type of flour, we call it as reconstituted flour. uh, we take endosperm and we add some amount of bran into it to reconstitute the mineral content or vitamin content, B complex vitamins in it. Then we have patent flour. तो जो patent flour है आपका, it is highly refined flour. इसमें क्या है कि it is combination of फ्लोर, डिफरेंट फ्लोर स्ट्रीम्स। आपने जैसे पढ़ा होगा वहाँ पे आपके डिफरेंट फ्लोर स्ट्रीम्स है। वन वी कॉल देम एज रिडक्शन रोल वन, देन रिडक्शन रोल टू, रिडक्शन रोल थ्री। तो हम डिफरेंट फ्लोर्स, जो ये डिफरेंट स्ट्रीम्स है, हम इनको कंबाइन करते हैं टू मेक पेटेंट फ्लोर। और जो ये पेटेंट फ्लोर है आपका, इसमें ऐश कंटेंट कम रहता है, इसमें प्रोटीन कंटेंट भी आपका कम है। देन इसका जो कलर है ये बिल्कुल वाइट रहेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ कलर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। देन वी हैव ट्रीटेड फ्लावर्स। ट्रीटेड फ्लावर में क्या है कि हम फ्लावर्स प्लस सप्लीमेंट्स, वी एड सम सप्लीमेंट्स लाइक विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन। तो वो हम फ्लावर में ऐड करते हैं, एंड इट इज़ नोन एज ट्रीटेड फ्लावर। मोर टाइप ऑफ फ्लावर विच इज़ नोन एज कंपोजिट फ्लावर, जो अभी ट्रेंड में बहुत चल रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी एड नॉन व्हीट फ्लावर प्लस व्हीट फ्लावर। जैसे मेज है, ओट है, बार्ली है, ये फ्लावर हम मिक्स करते हैं व्हीट फ्लावर के साथ,
to make a new type of flour which is known as composite flour. Then we can make products out of this flour. And then lastly we have byproducts from the milling, जिसमें जर्म ब्रांड फीड आता है आपका.